also welcome all the participants in the webinar. Thank you so much, Hideshji. You gave me an opportunity to be here as a moderator. So let's not waste the time and come to the point. बिल्कुल शुरू कीजिए सोम जी, आप पहला क्वेश्चन हाँ जी सर, ये पहला क्वेश्चन हम लेते हैं केसीसी लिमिट एग्रीकल्चर से लेते हैं सर। क्वेश्चन ये है कि एक केसीसी लिमिट जो है वो रिवॉल्व नहीं हुई पूरी तरह से, हालांकि उसका जो इंटरेस्ट था वो फुली रीपे हो गया। तो इस अकाउंट में क्या हम उनको जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिलती है सरकार से, क्या ये अकाउंट उस इंटरेस्ट सबवेंशन को लेने के लिए हकदार रहेगा सर? ये क्वेश्चन है सर। सर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਟਰਮ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਾਈ ਵਿਊ। ਤੇ ਮੇਬੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਵੋਲਵ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਰੈਗੂਲਰ ਟੂ ਕਲੇਮ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ? और ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ some bank classify based upon this classify this account as substandard. If it is they have classified substandard, then he is not eligible to get the interest subsidy. Otherwise we can report this matter in the LFAR. ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ 1 ਈਅਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਪੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਐਨਪੀਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਸਪੋਜ਼। ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਟੂ ਕਲੇਮ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ। Certainly, I agree with you. Okay, one more point sir, subvention ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2% ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 1% ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਡਿਊਜ਼ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। that means government ਦੀ overall intention ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ accounts ਨੂੰ regular ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। so the longer account remains regular, the more it will be eligible for the subvention. ਜਿੱਥੇ ਹੀ regularity ਗਈ subvention all together ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ, ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਮਸਟ ਬੀ ਰਿਵੋਲਵਡ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇਵਨ ਇਫ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਪੇਡ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਿਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੌਪ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੌਂਗ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਕ੍ਰੌਪ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ 2 ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਜ਼ਨਸ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਾਤਾ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਵਨ ਇਫ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਕਵਰਡ ਹੈ that has to be classified as NPA। ਤੇ ਜੇ ਉਹ NPA ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਫਰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਹੈ
that point is not related to agriculture advance. ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕੋਪ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਗਸਾ ਪਜ਼ਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਸਰਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਸਰਵਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਸੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਟੂ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਬਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਿੰਗ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, रोटेशन ऑफ द लिमिट पे है। नहीं बट सर अवनीश जी जो ये बैंक वाले करते हैं ना, बैंक वाले हाँ जी, हाँ जी। बैंक branches considering the serving of interest is sufficient ground to treat that account as standard। मैं वही कह रहा सर, ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਜ਼ਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਦਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਨॉन ਓਵਰਡਰਾਈਂਗ ਇਹੀ ਬੇਸਿਸ ਰਹਿਣਗੇ। बट व्हाट इज द सर ऐसे ऐसे नहीं, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोविजन अगर हम केसीसी की बात करें, शुड वी गो फॉर इंटरेस्ट सर्विंग ओनली और बोथ थिंग शुड बी देयर, इंटरेस्ट सर्विंग एज वेल एज रोटेशन ऑफ अकाउंट। एनपीए ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ both things should be there। ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, that is a separate issue। ओके एनपीए ਲਈ ਤਾਂ both things are must। डेफिनेटली सर, अगर एनपीए के लिए दोनों चीजें चाहिए कि इंटरेस्ट भी आना चाहिए और रोटेशन भी आना चाहिए। Sir, sorry to interrupt you. Somebody in the message is asking to continue in Hindi or English only, because ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ बंदे जो हैं ये आउट ऑफ पंजाब भी अपने साथ जुड़े हैं, तो ओके ठीक है, जी सर, वेल नोटेड, थैंक यू for the purpose of NPA classification it is must the account should rotate and the interest should be realized, otherwise the KCC account would be classified as NPA as per the norms। अगर सर सिर्फ मीनिंग दे रहा है कि अगर इंटरेस्ट आया है सिर्फ और रोटेशन नहीं हुई तो हम अकाउंट को एनपीए कर देंगे जी, है ना, और अगर उस अकाउंट को एनपीए कर दिया तो जो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन आ चुकी हैं पिछले साल 2 साल 3 साल 4 साल में, जब से सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा है रोटेशन नहीं हो रही, तो क्या वो इंटरेस्ट जो सबवेंशन आई हैं वो भी उसका भी कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसको भी रिफंड करना रिटर्न करना पड़ेगा या नहीं? as going by the norms it is not allowable, we should make a comment at least। ओके उसकी जो क्लेम करनी है उसका obviously it should be there। ओके, एनी अदर व्यू सर? भरत रतन जी कोई और व्यू इस पे आपका जी? और ऐसा है कि as far as this agriculture finance is concerned, I agree with you, Jasminder ji, interest as well as the rotation in the account is concerned is very much required as per the RBI circular. If rotation is not there, the account may be classified as NPA and may be classified as substandard. So as in the case of a general CC account, if only interest is serviced, that doesn't mean that account will be saved from the NPA. If there is no sufficient turnover in the account as generally required, it shows one of the weak factor, including stock statement, including this normal balance sheet, and including this ratio analysis. And overall, if we will see, if he is hardly serving the interest, and there are very much likely chances that that account will be classified as an। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ जी सर, anything regarding this KCC? ठीक है सर, बाकी आगे क्वेश्चन में लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं वो कांसल साहब अगला क्वेश्चन मैं एक बार पूछूं? आप पूछिए सर, पूछिए। हाँ जी, हेलो हेलो, आ रही आवाज जी? हाँ जी, सर अगला क्वेश्चन है, what if a stock statement as on 31st March 2022 submitted by customer in case of CC account?
सर आपकी आवाज बहुत दबके आ रही है सर, पहले ठीक थी। अब आ रही है जी? हेलो जी सर। हाँ जी हाँ सर। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अगर नॉर्मल सीसी लिमिट का क्वेश्चन है जी, अगर सीसी अकाउंट में 31/22 को स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करी गई थी, वो स्टॉक स्टेटमेंट बाद में बैलेंस शीट आई तो उससे मैच नहीं करती थी। देयर वाज लॉट ऑफ वेरिएंस अमंग स्टॉक स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 22 एंड बैलेंस शीट एज एट 31st March 22. दैट टाइम डीपी वाज 90 लाख एज पर स्टॉक स्टेटमेंट, बट एज पर बैलेंस शीट जो एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट जो डीपी निकल के आ रही है वो 50 लाख निकल के आ रही थी। मीनिंग देर बाय 31/22 को स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से डीपी 90 लाख थी जो ठीक थी और मेरी अलाउड थी, बट जब बैलेंस शीट मेरे सामने आई तो बैलेंस शीट के हिसाब से 31/22 को डीपी 50 लाख बनती थी बट यूटिलाइज 90 लाख थी। तो इसका मतलब सर जब ओवर यूटिलाइजेशन होगी लिमिट की, 50 लाख अलाउड था, 90 लाख यूज हो रहा है, तो अकाउंट एनपीए होगा 31/22 से या नहीं? Sir ji, there are many aspects to consider. This 31st of March, there is a annual financial results in which the stock is mentioned of 50 lakh as you said in the example. You are hearing me? यस सर। यस सर, यस You सर, are hearing me? यस सर, बिल्कुल So, डेफिनेटली। generally it is 50 lakh as per your example, and they write in the stock statement 90 lakh 2-3 days before or 2-3 days later, not exactly on the 31st of March. Generally, this practice is adopted. But to classify an account NPA, there should be a regular 90 days overdue. We have to see the GST 1, 2, 3 and see what sales they have shown. And we have to see the stock statement. We have to see the QAS. In that, in the 31st of March stock, we should add the purchase, less the cost of sales, and we should arrive with the April. What is the DP is there in the April, in the May, in the June, and accordingly we may classify that account as NPA. Not only based upon the 31st of March, we cannot classify that account NPA. If you want to write something, you can write in the LFR. If you want to classify that account NPA, you have to see the April, May, and June, looking into all the aspects, looking into the book debt statement in which whether the debtors are of the same amount for the last 3 months, and that will be out of the DP. And we have to see the related party in each and everything. For 90 days, we have to see that whether that account is short of DP. Only then we can classify that account as NP. सर बट जब 31/22 की एक साल पुरानी जब मेरे पास स्टॉक स्टेटमेंट आई थी अप्रैल 22 में 7 अप्रैल को, तो वो ठीक थी एज पर स्टॉक स्टेटमेंट मेरी डीपी बन रही थी। ठीक है जी। तो जब मेरे पास ऑडिटेड बैलेंस शीट आई किसी सीए साहब की सर्टिफाई होके, उसके हिसाब से डीपी नहीं बनती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक स्टेटमेंट वो ओवर इन्फ्लेट करके दे रहा है। नहीं, उसमें ये बात है, इफ यू वांट टू प्रूव दैट यू हैव टू सी, यू हैव टू ऐड द परचेज फॉर मतलब 1st of April टू जो 30th of April में जो परचेज हुई है 1 month एंड व्हाट इज सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा करके अप्रैल में भी करेंगे, मई में भी, जून में भी। If all the 3 months DP is short, then you can classify that account as an. Okay, मतलब meaning not on the basis only of 31st March 22 balance sheet we cannot classify. Not we can write in the LFR. Okay. ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਨਡਬਲਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਐਨਡਬਲਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਡੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ ਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੀਪੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਐਨਡਬਲਯੂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਨਡਬਲਯੂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਿਨਿਊਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ
ਉਹ NPA ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। Kansal saab, over to you. Thank you, sir. Sir, I'm having another query on KCC. A person is having 3 acres of land, only 3 acres of land, and that person is showing that he has acquired about 30 acres of land on lease, जो उसको पटे पे कहते हैं। 3 एकड़ उसके पास अपना है और 30 एकड़ उसने पटे पे ले लिया। तो इस केस में मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना रहना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 33 ਏਕੜ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹਾਰਡ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਐਡਵਾਂਸ। फिर मैं अपनी I'll come back in English. If I have 3 acres of land, 30 acres of land I take on lease from A. So I get it for 33 acres. Then I give my 3 acres of land on lease to another person. Okay? Then he takes lease from some other person and he has 10 acres of land. But law जो है that is very clear कि भी you have your own land, you have land on lease, so you can get it for tilling and with that you can calculate your finance on KCC. तो वो banks जो हैं कर रहे हैं, but this is on record कि जितनी land banks के record में lease पे है उतनी land की existence नहीं है, but it is going on. मतलब ये clear। हाँ जी। सर इसमें ये इसको जज कैसे करेंगे कि उसका फाइनेंस सही? अभी उसमें बैंकर को पूछा गया कि सर जब आप गए थे इसको वेरीफाई करने के लिए तो आपने इसको लैंड को वेरीफाई कैसे किया कि इसके पास 30 एकड़ इसने बकायदा लिया हुआ है? क्योंकि जो लैंड रिकॉर्ड जो है, जो गिरदावरी है या कुछ और डॉक्यूमेंट जो है, उसमें कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ कि ये लीज पे दी है। उसमें खुद कास्ट लिखा हुआ है। अपने पंजाब में जो खुद कास्ट चलता है वो लिखा हुआ है कि ये बंदा खुद उसको जोत रहा है। दूसरी तरफ ऐसा कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा कि वाकई वो लीज रेंटल्स का पेमेंट कर रहा है। तो बैंकर से जब ये पूछा गया कि सर आपने इसको वेरीफाई कैसे किया कि ये वाकई इस बंदे ने 30 एकर्स ऑफ लैंड लीज पे लिया है, बिकॉज देयर इज नो लीज एग्रीमेंट। तो बैंकर का जवाब ये था कि सर मैं उसके साथ बैठ के गया गाड़ी में, उसने बोला जी यहां से लेके वो जो जितनी जमीन आपको दिख रही है वो सारी मैंने लीज पे ले ली और हमने उसको फाइनेंस कर दिया सर। एंड दिस वाज द एक्चुअल सीन। तो इस केस में आरबी गाइडलाइंस क्या कहती है सर? In this case, lease deed is on record. This is as per my knowledge. It is not on oral saying that I have taken this land on lease. Lease deed is on record. तो वो lease deed की further verification जो है वो होती नहीं या मांगते नहीं या either you don't do it. But this is again open fact के जो मैं दोबारा at the cost of repetition, जो बैंक्स के रिकॉर्ड में लीज है एग्रीकल्चर लैंड की, उतनी लैंड एक्चुअल में अवेलेबल नहीं है इन स्टेट वाइज। सर कुछ फर्दर ऐड कर दो रतन। ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल I am owner of 3 acre of land. I am plowing on lease 30 acre and total 33 acre. First of all, bankers are calculating, suppose मेरे accordingly 50,000 per acre they are financing, and about this 33 acre, and this will come to 16 lakh something. If I will see 50,000 per acre, it will come to 16.50. 16.50. And there is a one cap which bankers are
imposing the cap. Whatever you are the owner of the land, you are seeing the collateral value of that land. If the collateral value is of 3 acre is 10 lakh, then the bank will not finance more than 10 lakh. They will restrict it to 10 lakh, although you are plowing 33 acre. Number one. Number two, for the lease, whatever you are plowing extra land, you should get the copy of the mutation or intikal, which banker will not give you, because in the copy of the intikal and the mutation, the person who is giving us land on lease, he must have availed the loan against that land. By mortgaging that land, he must have taken some loan. If you will ask for the mutation, and it will be very much clearly written in the mutation, this land is mortgaged to this bank. Red pen mein likha hoga. And if you will ask, the banker will not provide. He will come in a request mode. Sir, ये म्यूटेशन की कॉपी वो दे नहीं रहे, हमें मिलती नहीं, ये देखो जी, he is following this much of land. So these 2 points will sufficient to nail the banker as well as the borrower. हाँ जी सर. सर ठीक है. Any questions on this thing? I think over to Hitesh ji. Hitesh ji, आपकी आवाज आ नहीं रही हितेश जी. हितेश जी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ईयर प्लग ला के डायरेक्ट मोड ਤੇ आ ਜਾਓ. Not, your voice is not coming. हितेश जी, आपकी आवाज वो ऐसे आ रही है जैसे कोई बंदा घर में घुसने लगता है, वो म्यूट हो जाता है ना. You are hearing us, but we are not hearing you. इतने में फिर मैं एक नया क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ. हाँ जी. सर क्वेश्चन ये है कि जो एग्रीकल्चर फाइनेंसेस रहते हैं, सर बुरा मत मानिएगा, मेरे को एग्रीकल्चर फाइनेंसेस दिए हैं आज. तो जो एग्रीकल्चर फाइनेंसेस रहते हैं वो जनरली ऑलवेज these remain as a gray area in the bank finance because इन अकाउंट से बहुत सारी इरेगुलरिटीज रहती हैं. कोई रिवॉल्व पूरा नहीं हुआ, किसमें सबवेंशन बनती है नहीं बनती. सबसे ज्यादा इश्यू रहता है कि इसको कब हमने एनपीए कंसीडर करना है. बैंकर्स कमेटी क्या उसको 6 महीने का समय देती है, 1.5 साल का समय किस क्रॉप में है. बहुत सारे एरियाज रहते हैं. और जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा अगर अकाउंट वाइज क्वांटिटी वाइज अगर एनपीए देखा जाए तो वो एग्रीकल्चर फाइनेंसेस में निकलता है. इन सब चीजों के बावजूद जो गवर्नमेंट है या जो बैंक्स हैं, वो इस फाइनेंस को सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ फाइनेंस काउंट करते हैं. आई मीन टू से, एज पर द गवर्नमेंट एंड एज पर द बैंकर्स, agriculture finances are the most secured finances in the whole banking industry. Sir, please explain the reason that why they are considering agriculture finances as the most secured finances. हाँ जी सर जी. Yes sir. जसमिंदर जी बोलिए. Okay. Sir, I differ from your statement. Bank does not consider agriculture finance as the safest finance, but definitely as per government and RBI guidelines, it is a priority area. उन्होंने farmers को जो है, they have to give them finance for
recouping the circle of the crop. So it is a priority area. And if we go by the mode ke bhi safest kya hai, so if you calculate the percentage of finances going bad as per agriculture, as per considering the overall banking industry, so I still think it is a very, very nominal figure considering the large advances which have gone bad. Because large advances, if they go bad, it will be something like 1,000 crore, 5,000 crore, 10,000 crore, even much more than that. So agriculture, if they go bad or NPA, they are like 1 lakh, 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh, 50 lakh, 1 crore. तो ऐसे होते हैं. तो that's why agriculture के NPA आज भी जो हैं, they are in a very small district. वो आज भी बहुत छोटे हैं. And जो दूसरा है वो no doubt इस करके, but definitely क्योंकि they belong to a lower net income group, so government supports them as a priority sector advance. Any sir? जी सर. Should I add something? हाँ जी बिल्कुल जी. Whatever Jasminder Singh ji says, it is well taken, and I want to add something more for our knowledge purpose. This is well taken point that the vital component of the economy and play a crucial role in ensuring the food security and reducing the poverty of the country. But this agriculture sector is very risk prone, just as weather related risk, market fluctuations, pest outbreak can lead to a crop failure, and it is a very risky. Although the government has imposed the ask every national bank, there should be a 18% your exposure should be with the agriculture sector. If they reduce less than 18, and some penalty is upon them, and generally if some national bank increase their they taken the 20% or 22% to the agriculture sector, and they sell their portfolio to the other bank at some premium just to save them to get a penalty, and वो penalty को save करता है. लेकिन ये मतलब fluctuation है इसमें, तो ये मतलब नॉन परफॉर्मिंग वाला हाई लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग है इस सेक्टर में, एंड सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द बैंक. और ये क्या चीज है इसमें, मतलब it provides us more employment, although it is not supporting to the economy, but it is reducing the poverty and the food security and provides the more employment. And government provides them many supports in the shape of subsidies, incentives, just to remain the agriculture sector in limelight and very supportive, and the farmer should remain support to our employment and the food security, and gives them many facility in the shape of crop insurance, warehousing receipts, contract farming, just to save the agriculture, so that banks should take at least 18%, should provide loan 18% of their total advances. And this is a playing very much crucial role, as Mr. Som Kansal has said, just to protect our poor people, just to give the employment, and just for the food security. And this is the main crux, and that is why the agriculture is playing, although it is a risk prone and high level of NPA, and government is trying to support them in spite of these factors. Right, sir.
थैंक यू। Any question on this topic? I think, कांसा साहब क्वेश्चन ना चैट बॉक्स में भी हाँ जी आ रही है। जो आप कुछ क्वेश्चन मैंने कहा चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं, अपने पास जो पहले क्वेश्चन आ रखे हैं वो ले लें, फिर चैट बॉक्स वाले शुरू कर लेंगे आप। Over to you now. नहीं, आप पहले सारे केसीसी वाले इकट्ठे ले। चलिए मैं से। The next question is that the agriculture finance is to be considered as NPA as per the short crop season and long crop duration जो है, long crop और short crop के साथ उसको हम लोग consider करते हैं। Sir, kindly explain the concept of long and short crop seasons as it applicable in various states, and from where we have to get the idea that which how much months are applicable in a particular state, and kindly explain the due date from which the tenure is to be considered to calculate whether the account is becoming NPA or not. तो short crops, long crop season और due date सही है, इसके बारे में बताइए। सर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ मैं बोला? दसो जसविंदर जी। Sir, it is like that कि any crop which can be rotated 2 times in a year, that means 6 months, that is a short duration crop, and any crop which is not a short duration crop is a long term crop. Long term normally is one which is sugarcane जो है that उसका जो crop rotation circle है that ranges from 10 months to 18 months. तो जो उसका 10 months या 12 महीने वाला होता है उसका नाम होता है इकसाली, तो वो भी लॉन्ग टर्म हो गई। और जो 18 महीने में जाती है या 15 महीने में जाती है 15 months और 18 months, दैट इज प्री सीजनल। तो ये these are different varieties, these are again long duration crops। और जो दूसरे बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स वो 5 year वाले हैं, दैट इज कोकोनट, मैंगो एंड टीक एटसेट्रा। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो शुगर केन या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स या किसी मतलब दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है उसके लिए normally it is sanctioned for 1 year, that is 2 crop seasons, and further for 2 crop seasons after the time it has been sanctioned for, if it remains unrealized on unrotated or interest is not received, so it becomes NPA. That means a short duration crop which was financed on or before 31st March 2021, if that remains unrotated or unrealized or interest is not recovered as on till 31st March 23, so it will turn into NPA. So for duration crops, if it is 12 months or 18 months, jo in case of sugarcane or any other similar crop, so it can be like if it is 1 year, so the sanction letter that will be containing the period of sanction, period of rotation. So if it is 18 months, it will go up to 3 years. If it is 1 year, it will again it will be the same 31st March 21 before or on, and long duration it remains unrealized, unpaid till 31st March 23. It will again become NPA unless it is 18-month crop season. So it will become, or 15 months will become NPA after 2.5 years, and 18 month will become NPA after 3 years. सर इसमें अगर देखा जाए, अगर हम बात करते हैं कि जो क्रॉप सीजन है वो 6 महीने का है जी, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि साल में 2 फसलें यहाँ पे आ जाती है जी। जैसे आप बता रहे हो कि 31/3/2021 को एक फाइनेंस दिया गया,
तो कब तक ये फाइनेंस वापस आ जाना चाहिए या रिवॉल्व हो जाना चाहिए? It is 2 crop reaping seasons. So like if it is normally it won't be 31st March, but anyway, if हाँ, जी। hypothetically if we case the reaping season for wheat is like April. सर कहना ही से कि बैंकर ने फाइनेंस दिया, मान लेते हैं 10 लाख रुपए का फाइनेंस दिया और मान लिया कि ये उसने मार्च में दिया जी, तो वो एक उसको पीस ऑफ लैंड को सब कुछ करने के लिए दे दिया। जब उसके बाद उसकी फसल आएगी वो सितंबर या अक्टूबर में कहीं पे पंजाब में आती है, कैन बी आस्क कि उसकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर हो सकती है, क्योंकि तब तक उसके पास पैसा आ जाएगा एजेंसी से। कैन बी से सो? नहीं, ड्यू डेट तो वैसे 6 मंथ्स ही होती है, इट इज 6 मंथ्स, बट बैंक्स उसको सैंक्शन करते फॉर 2 सीजन शॉर्ट क्रॉप को, कि बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन वेदर कंडीशन। तो अगर एक खराब भी हो जाए, ना भी खराब हो जाए, even if you the weather condition remains okay, and even if you don't repay, you pay the interest or you don't pay the interest, it is still considered as regular up till 1 year. That's why you are giving 2 years from the date of sanction. जी सर। सर कुछ ऐड कर दो सर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ रहेगी? Sir, you are expert, and I really appreciate you give suitable example, and it is a very simple and understandable. बैंक वाले ना जी, बैंक पीपल दे नॉर्मली कंफ्यूज यू, दे विल से कि जी सर हमारा तो, आई हैव पर्सनली विटनेस दिस, कि जी अवर सैंक्शन टर्म इज फॉर 5 years. तो sanction term can be 5 years only for like crops like coconut, mango and teak, in which banks are not popular because it is not a priority sector advance. So in any case, 2 crop seasons is bank for rotation it is given. हाँ जी, हाँ जी कांता साहब। नहीं तेज जी, now your voice is coming but your mic seems off. ਤੁਸੀਂ दो जगह तो ऑपरेट कर रहे हो सर लैपटॉप पे ना आवाज नहीं आती तो मैं माइक right. पे Now I see. मोबाइल पे आवाज के लिए, वीडियो के लिए लैपटॉप पे चल रहा है। right. सर ये क्वेश्चन है जी कि एक केसीसी अकाउंट था जी, नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन। सर केसीसी अकाउंट में अनयूटिलाइज्ड कर लो अमाउंट आंसर नाल ही बना लो। आता रही है जी। कांता साहब म्यूट हो गया आप। जी, तो मैं रिपीट करता हूं जी कि केसीसी अकाउंट था, उसमें कुछ पोर्शन जो था अनयूटिलाइज्ड पड़ा था, तो बैंकर ने क्या किया, वो अनयूटिलाइज्ड पोर्शन को वहां से निकाला, कुछ अकाउंट्स में घुमाया, कुछ केसीसी अकाउंट्स का इंटरेस्ट उसने रिवॉल्व किया उस तरीके से, फिर किसी और अकाउंट में डाल दिया कासा को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से उसने अपना डिपॉजिट भी बढ़ा लिया, कुछ केसीसी अकाउंट्स को रिवॉल्व भी कर लिया और एडवांस भी बढ़ा लिया। ये चीज अपने एक भाई ने पकड़, अब वो कह रहे हैं जी कि इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, इसको प्रेजेंट कहां पे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे करना है। हाँ जी सर, रतन जी तुसी लोगे? हाँ जी सर। मैं क्या है कि you mean he unutilized a certain portion of the limit, and that which is unutilized you used it in other agriculture account or other than agriculture also? सर मैं रिपीट कर देता हूं सर। Yes. केसीसी अकाउंट था जी, उसमें Yes. कुछ अनयूटिलाइज्ड पोर्शन पड़ा था,
सी 10 लाख रुपीस उसमें पड़े थे, मान लेते हैं हम लोग। बैंकर ने उस 10 लाख रुपए को वहां से निकाला, कुछ केसीसी अकाउंट्स में घुमाया, रिवॉल्व किसके करने। किसके किसके केसीसी अकाउंट है? सेम पर्सन और somebody नहीं सर, अदर सर, किसी और somebody else? somebody else मे बी बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਖਾਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ 10 ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਤੀ ट्रांजैक्शन। रिवॉल्व किया। उसके बाद उसने अपना इस तरीके से कासा भी बढ़ा लिया, एडवांस भी बढ़ा लिया, कुछ केसेस अकाउंट को ठीक भी कर लिया। अब ये चीज किसी ऑडिटर ने पकड़ लिया उसको। अब वो पूछ रहे हैं कि इसको कहाँ कहाँ पे मेरे को प्रेजेंट करना है, इसको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, इसकी प्रेजेंटेशन कहाँ पे है? सर ऐसा है कि बैंकर हैज सेव्ड many account to turn as NPA, and this is an evergreening. This is an evergreening. They have utilized one account to save the other account from NPA. Number one, जब evergreening की है तो in which account they have rotated those entries, those account will be classified as NPA. Since bank has saved just by using the funds of one account just to save other account NPA, and bank has rotated those entries in those accounts, and they have increased the CASA. CASA में ऐसा है कि you can report that point in the LFAR. CASA में तो you can only report in the LFAR, you cannot classify the account as NPA. वो तो उसमें होगा. The whatever unutilized portion they have used in other accounts to save those accounts from NPA, वो तो account NPA, certainly those will be classified as NPA. हाँ जी सर, बोलिए जसविंदर जी। सर गुप्ता जी ने बिल्कुल he has rightly pointed out. I like to add 1 or 2 points here. First, the most primary requirement is any withdrawal should be supported by documentary evidence, either check or withdrawal slip. If that is not there, that means the funds of other accounts are not through their own sources. So the accounts would be turned as NPA. Secondly, if those accounts, similarly deposit slips should also be there. If the funds have gone to CASA, it will amount to window dressing, which also needs to be reported. But if it is supported by the data, documentary evidence, there is a withdrawal slip, there is a withdrawal check, and there are deposit slips duly supported by the signatures of the borrower. So you only can understand the thing, but you cannot afford to comment because documentary evidence does not support. This is one part. Secondly, if he goes to the extent of withdrawing the funds and depositing the funds, so he can go only up to the extent where the interest portion is not charged or not cleared. He has to get that, like if from my account, let us say 10 lakhs was surplus, he uses the 10 lakh surplus to agar wo 10, if he uses that amount for 10 accounts, तो उन accounts में जो unrealized interest है, that he cannot get back because system won't allow. उसके लिए उसको temporary OD देनी पड़ेगी. So this you should take care. अगर temporary OD दी है, this is again a evidence कि भी वो funds उसके नहीं थे. Those funds never belong to the borrower. तो अगर उसका documentary evidence नहीं है, then also you can वो in case chain of say 10, 14, 15, 20 or one account, whatever the figure, hypothetically, those accounts will be classified as NPA provided they fulfill that criteria. Otherwise, you will report it as part of window dressing or as per the norms which are hit. हितेश जी आवाज बंद होगी ਤੁਹਾਡੀ फिर मेरे ख्याल ये जो कंसल साहब ने क्वेश्चन पूछा कि किसी और सीसी अकाउंट से दूसरों के अकाउंट्स वो सेट वो कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, क्या वो अलाउड रहेगा? उससे वो कोई एनपीए की प्रोविजन तो हिट नहीं करेगी? सर, it has to be supported by documentary evidence.
इसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो ऐसे है ना, एक बंदे की लिमिट थी मान लीजिए 20 लाख की 50 लाख की सीसी लिमिट, वो आइडल पड़ी थी, यूटिलाइज नहीं थी, और बाकी अकाउंट खराब हो रहे थे, रोटेशन नहीं हो रही थी। बैंक मैनेजर को पता था रोटेशन ना हुई तो अकाउंट एनपीए हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस जो आइडल पड़ी लिमिट थी चाहे 50 लाख की थी, जितने की मर्जी, उसमें से सारे अकाउंट में 5-5 लाख बारी बारी से घुमा के एट दी एंड पैसे वहीं वापस ले आए। नहीं सर, it has to be supported by the withdrawal slip or withdrawal check of the borrower, जो जिसमें 10 लाख सरप्लस पड़ा था। अगर वो withdrawal slip या documentary evidence if you have, so you can only presume, it can be a assumption, not documentary evidence कि भी वो account rotate हुआ। It can be genuine, it may be genuine, it may not be genuine, but if documentary evidence is not there, like recently जो अभी चल रहे हैं बैंक ऑडिट्स, उसमें भी मेरे पास ऐसे केस आ गए हैं where there is no documentary evidence, even voucher for that withdrawal slip is not there, क्योंकि voucher as you all know daily vouchers जो है वो सील हो जाते हैं। डेफिनेटली सर। ठीक है ना, अब उसमें सील होने के बाद उसके ऊपर वो लाख की स्टैंप भी लग जाती है कि भी वो उसको छेड़ नहीं सकते, तो उसमें उनके पास जो है वो वॉचर्स नहीं है, नाइदर विड्रॉल स्लिप नॉर चेक विड्रॉल, एंड उसके पैरेलल दूसरी तरफ डिपॉजिट स्लिप्स भी नहीं है। तो दिस क्लियरली शोज दीज आर ओनली accommodating entries. So in this chain, n number of accounts involved, they will all be classified as NPA provided they fulfill the criteria on the norms for NPA number 1. And secondly, जो window dressing में या ये this can be again classified as this can be suspicious and fraudulent entry also. You can make एक तो एमओसी आप डालोगे और दूसरा आप एनपीए में उसको क्लासिफाई भी कर सकते हो, और फ्रॉडुलेंट, दिस अमाउंट्स टू फ्रॉडुलेंट एंट्रीज, दैट आल्सो यू कैन से कि भी दीज आर फ्रॉडुलेंट एंट्रीज। और अगर मान लीजिए सर वाउचर या चेक है उसके पास, बैंक मैनेजर के पास वहां रिकॉर्ड में, तो अकाउंट ठीक है सर। डॉक्यूमेंट तो जो विटनेस है आपके पास, तो यू ओनली कैन प्रिज्यूम कि ऐसा हुआ था। I don't think we can even comment on that because we were not present. Okay. हाँ जी कांसा साहब, वो आप ये जी सर रतन जी। सर उसमें ऐसा है, I 100% agree with Jaswinder ji. I want to add one more thing. If the banker rotated those funds without the consent of the concerned borrower whose limit is ideal, without taking voucher, without taking check, if he is rotating the funds without his permission, this is a fraud on the part of bank, on the part of manager. He cannot use the fund without the permission of the borrower. Okay. This is a very serious point. Should we move to the next question, sir? If any panelist want to add anything, then okay, otherwise move to next question. कांसा साहब मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं, फिर आप अनम्यूट कर लेना खुद को। जी सर। सो जो लास्ट पॉइंट गया सर, ਉਹਦੀ समरी यही है कि if the funds are debited without a debit mandate from the borrower, then it is a fraudulent activity. Otherwise, if paper documentation is complete over there and account is well within the limit when debited, then it is only the documentary evidence that can say what the transaction occurred. Am I right, sir? Okay, sir. Right. Thank you. बिल्कुल परफेक्ट है जी, बिल्कुल परफेक्ट। कांसा साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, I am having the last question on KCC. There is a specific interest subvention of 3% available to marginal farmers on finance up to 3 lakh rupees. But there are two schools of principles to calculate this benefit. The first school of principles assumes that this benefit is available to the marginal
farmers only which are having finance of up to rupees 3 lakh only. But on the other side, the other school assumes that this benefit should be available to each and every farmer, but up to the amount of 3 lakh. I just clear myself. As per the first school of principles, if a person is having 2.50 2.5 लाख उसके पास उसने फाइनेंस लिया है, तो द बेनिफिट शुड बी अवेलेबल टू दैट पर्सन, जो सबवेंशन देनी है 3 वो मिलेगी। जो दूसरा स्कूल कह रहा है जी कि अगर एक बंदे ने 10 लाख रुपए का फाइनेंस भी लिया हुआ है तो 3 लाख रुपए तक उसको सबवेंशन मिलनी चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए। बाकी जो बैलेंस बचेगा 7 लाख रुपए, उसके ऊपर ब्याज दूसरा होना चाहिए। तो ये दोनों जो स्कूल है वो ये कहते हैं। सिर्फ काइंडली इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कीजिए कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। वो जो 3% का जो वेवर है वो सिर्फ मार्जिनल को मिलना चाहिए या सबको मिलना चाहिए 3 लाख रुपए तक? जसविंदर सर। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्लिक्ट डेफिनेटली इज देयर। मेरा ख्याल है बिकॉज अवनीत जी इज इन बैंक ऑडिट, ही विल क्लैरिफाई, बट आई पर्सनली फील कि दोज अप टू 3 lakhs दे आर एलिजिबल एंड बियॉन्ड 3 lakhs तो वो इंटरेस्ट सबवेंशन खत्म हो जाती है। बट स्टिल आई वुड लाइक इफ Avneet ji has clarified this point, or VR Gupta ji, if you can clarify on this. I am not 100% sure on this point. Gupta ji, आ रही आवाज? मेरे ख्याल गुप्ता जी दी वीडियो स्टिल हो गई। गुप्ता जी, you are Avneet ji, can you hear my voice? गुप्ता जी दा मेरे ख्याल कनेक्शन थोड़ा जा कुछ इशू है क्योंकि उन्होंने दी वीडियो स्टिल। Avneet ji, are you hearing my voice? To my understanding, it is available only if the finances or the funding is or the borrowing is up to 3 lakhs. Beyond that, that 3 lakh interest subvention is gone. सर इसके ऊपर जो है मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि अगर 3 लाख से ऊपर वालों को भी हम 3 लाख का बेनिफिट देना शुरू कर देंगे तो मोटिव जो है वो ये चीज खत्म हो जाएगा। That is defeated. पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। बस यही अगर इंटेंशनली उठाएं तो लॉ मेकर की इंटेंशन या बनाने वाले का माइंडसेट हमें दिखना शुरू हो जाता है। इट इज प्योरली लाइक जैसे हम इनकम टैक्स में कर रहे हैं सर के 5 लाख तक रिबेट मिलेगी, 5 लाख के बाद 2.5 से कैलकुलेशन शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। हितेश जी एक बारी गुप्ता जी ने कनेक्ट कर लो, मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए। मैं कॉल करता हूं उनको सर। तो Kansal ji, to my understanding and my school of thought, although I am not 100% sure, but still with the 95% of probability, apne पढ़ी है सारे ने, with 95% probability, I can say that if that is available to everyone, then that the very basic purpose of that is defeated. So it is only available up to the finances or borrowings up to 3 lakhs. Beyond that, it is not available. So anyone who is enjoying the facilities 3 lakh 1 rupee onwards. हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, वो ਤੁਹਾਡੇ व्यूज ਦੱਸੋ ਸਰ 3 लाख वाली ਜਿਹੜੀ सर ऐसा है कि if some person availed 4 lakh of KCC limit and subvention is available up to 3 lakh, he is eligible to get the benefit up to 3 lakh. For above 1 lakh, banker will charge higher than 7%, not 7%. 7% is for those who are the marginal farmer to whom bank want to transfer some subsidy. उनके लिए तो बैंकर में चार्ज 11-12% ऑन द अबव रुपीज 3 लाख। 1 लाख पे
12, 13, 11% will charge, and up to 3 lakhs, they will give the subsidy. Sir, another point is a person, let us say, who is enjoying borrowings of say 5 lakhs. उसको 2 लाख पे था, it is clear के भी 2 लाख पे up to 3 lakhs उसको कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? वो 3%, वो 4% लगेगा. मतलब 7% लग के उसको 3% की सब्सिडी मिलेगी. Yes. तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइक तो वही दो स्कूल बन गए सर यहाँ पे भी. सर इसमें बाकी ये बात है कि एज पर माय ओपिनियन उसको 7% लेस 3%, 4% लगेगा. और वही इशू है कि क्या 4 लगेगा या फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा बिलो 3 लाख भी, क्योंकि अगर सबको ही 3 लाख का बेनिफिट देना है तो छोटे फार्मर्स का तो कोई बेनिफिट रहा नहीं ना. मार्जिनल फार्मर्स का जो बेनिफिट उनको मिलना था वो नहीं रह गया मार्जिनल फार्मर्स वाली. हाँ, फिर तो जो मार्जिनल नेम है वो कहीं ना कहीं तो उसका मीनिंग डिफर कर गया. कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे हैं ना कि वो जो पर्पस था वो डिफीट ही हो जाएगा कि 3 लाख वाले छोटों को थोड़ा सा बेनिफिट देना है. अगर सबको देंगे तो फिर वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इस तरीके से. पर आरबीआई गाइड मार्जिनल फार्मर की जो डेफिनेशन है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, द फार्मर हु इज ओनिंग 2.5 to 3 एकड़ ऑफ लैंड. तो उसमें मतलब अकॉर्डिंगली तो ही इज एलिजिबल फॉर सब्सिडी up to 3 lakh. Beyond 3 lakh he will be charged a normal rate of interest. ਸਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਗੋਇੰਗ ਬਾਈ ਦੈਟ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਜਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, who is let us say owning 30 acres of land, so he will not get the benefit of 3 lakhs. ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈ सर. उसमें ये बात है ना, although he is owning 2.5 एकड़ or 3 एकड़ or 2 एकड़, but he must be plowing land 10 एकड़, 12 एकड़. He must have availed the finance from the bank beyond 3 lakh. तो मतलब उसमें they will see मतलब how much land he is owning. Sir, all the conditions are there, no issue about that. All the conditions are there and all the conditions are complied with. But issue is this: if a person is having a limit of less than 3 lakh and another person is having a limit of more than 3 lakh, that can be 400-500 lakhs. What I understood from Gupta ji's statement is that a person, if he's even if enjoying limit of more than 3 lakhs, but his personal holding is 2.5 acres or 3 acres, so he will be eligible for that benefit of 3 lakhs. Even if he is enjoying limit more than that, because he will be considered as a marginal farmer. करके वो he will come into the marginal farmer. Either he is owning 0.5 acre, 1 acre, or he is a landless farmer and he is plowing land 10 acre, 12 acre, 15 acre. He will be considered as marginal farmer and he is eligible to get the subsidy. That means we have to consider the area which a person is occupying, Which he owns. rather than the finance. Not occupying, which he owns. Rather than the finance. Rather than the finance, yes. उसमें ऐसा है कि finance में कभी है ना, if he is getting the finance more than 3 lakh, but it is he falls into marginal farmer, he is eligible to get the subsidy. Okay. सर इसमें ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया उसको कि you cannot plow the land more than 3 acre. He can plow the land 10 acre, 15 acre. Although he is poor, he is working hard, he is earning, but he is marginal, he get the subsidy. ये बहुत गुप्ता जी ने बहुत वजनदार पॉइंट दसिया. ये we need to verify the credentials
ਬਹੁਤ ਸਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈਟਸ ਆਫ, ਪੁਆਇੰਟ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਟਸ ਆਫ ਸਰ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਰ ਕਲੀਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। So I'm done with the questions on KCC. ये ना सॉरी, ये ना रीजनल रूरल बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 7 जुलाई 2016 का सर्कुलर है, मास्टर डायरेक्शन है इसमें मार्जिनल फार्मर की डेफिनेशन है। ओके So I'm done with the questions on KCC. I think Hitesh ji, you should take on now. राइट सर, राइट, थैंक यू। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ even if you are sitting on this side of the stage, you are a faculty, you may be a faculty, but till the time we take our last breath, we keep on learning. So ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ I want to compliment Gupta ji, that is really a great point. Really thankful to you, and I really feel proud कि I am with the prominent speaker. I am part of the prominent speaker. सर हाँ जी सर। सर आप दोनों को देखिए, एक एक आप जैसे कह रहे हो ना, यू आर प्राउड विद प्रोमिनेंट स्पीकर जसमिंदर जी कह रहे हैं आई एम प्राउड विद प्रोमिनेंट स्पीकर भरत रतन जी, और हम कह रहे हैं वी आर प्राउड विद प्रोमिनेंट स्पीकर जसमिंदर जी एंड भरत रतन जी। ठीक है ना, तो वी ऑल आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास आज दो अच्छे प्रोमिनेंट वर्सटाइल पर्सनालिटीज हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लेते, अब ये केसीसी वाले क्वेश्चन जो थे वो कांसा साहब ले रहे थे, वो नाउ केसीसी क्वेश्चंस आर ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in relation to CC account. If a credit summation in CC account is less than 50% of the turnover of business, then can account be treated as NP or not? सर गुप्ता जी ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ मैं लवा? सर लो, कोई बात नहीं। Suo moto on this condition only, I personally feel account cannot be treated as NPA. We have to look into other conditions as well. If we should definitely try to visit some accounts, SA accounts ko we should go and visit. If the manufacturing activity is not there, if the stocks are not there, if the debtors are not proper, creditors are not proper, then we may classify the account as NPA. Otherwise, we have to report that the rotation or the credit summation in the account is less than requirement. This is what I feel. Gupta ji, if you can add a need. Sir, उसमें ऐसा है कि I am of the opinion, I certainly agree with you. You are 100% correct. मतलब मेरी normally ये मतलब thought रहती है, if the account is income generating, bank is and he is serving the interest, we should take the lenient view. If we will classify that account NPA as per the normal other scenario, looking into the other scenario, and the income will stop, bank will stop getting the any income. Till the date bank is getting income, and you should take the lenient view. In the extreme situation, you should classify the account NPA. But further we should also thought about the economy of India and what purpose will serve on classifying the account NPA. He is serving the interest. In the extreme scenario, you can classify. हाँ जी सर, जसमिंदर सिंह जी कुछ, if you want to add something. सर बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। Right. In continuation with the same question, sir, one more, you can say another classification of same question. A person is availing a CC limit 40-50 लाख की CC limit है पर्सन की, और उसके लिए जैसे 2 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर चाहिए होता है 5 टाइम्स, 40 लाख के लिए 2 करोड़ का। तो हर बार वो पर्सन 50% अपनी प्रोजेक्शन तो देता है 2 करोड़ 2.5 करोड़ की ऐसे बना के देता है, बट हर बार सेल उसकी होती है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। तो उस पे सर कुछ कमेंट्स या कुछ और बनता है एक्शन लेना?
That account is not due for renewal. That account will be considered out of order because he has not achieved the projection. Only case, in such cases you can take, let us say on 31st March, जैसे आपने कहा हर साल ended. Excuse me. If 31st March ended, let us say 22, उसकी projection थी 2 crores की, and the achievement was 1 crore 20 lakhs, and in the subsequent months the turnover has increased as per GST returns or as per credit submission, then we can take definitely a lenient view. Otherwise such accounts are not due for renewal. उनकी जब renewal होगी तो that account अगर 1 crore 20 lakh की है तो that account will be renewed only for 30 lakhs. No, not even 30. 24 lakhs. 24, right? 24 तो 24 जब renew 24 पे होगा तो उसका बाकी का जो DP है that will be considered as out of order. But sir, same thing is happening since 2021. 21 में ऐसा हुआ, 22 में ऐसा हुआ, दोनों की बैलेंस शीट्स पड़ी ऑडिटेड, और 23 में तो बंदे का सिर्फ रिटर्न्स ही है, उनके हिसाब से भी ऐसा ही है। गुप्ता जी ने ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ if he is ਗੁप्ਤਾ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ, ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ। ਓਕੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੇ 40 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਰ effectively having the sale of around 1.25 crore CR, then ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਟਾਕ ਉਹ ਡੀਪੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। That's what I said. तो अकाउंट ओवर ड्रॉइंग ही चला जाएगा। नहीं विनीत जी, ऐसे है ना, उसके पास स्टॉक पड़ा है सफिशिएंट, स्टॉक की कोई एजिंग नहीं, वो डेटर्स की एजिंग तो ठीक है, पर स्टॉक पड़ा है उसके पास सफिशिएंट। नहीं सर सफिशिएंट है, बट जे सेल नहीं हो रही तो इट कुड बी अ स्लो मूविंग वन। ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੇਲ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਟਾਕ ਉਹਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸੇਲ ਉਹਦੀ 1.25 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਸਲੋ ਮੂਵਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਫੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਡੀਪੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ that will be definitely slow moving or obsolete, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੇਲ ਅਚੀਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਐਨਪੀਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, देयर आर hundreds of मतलब reasons for us टेक्निकल ग्राउंड पे, नो डाउट। अवनीत जी बोल रहे थे ना अभी? हाँ जी हाँ जी। एज अवनीत जी सेड, वो टेक्निकल ग्राउंड पे 101% इट विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए, बट वन मोर पॉइंट इज दैट बैंक शुड बी लिटिल बिट कॉन्शियस and he should give the counseling to the party, and they should take more collateral security. मतलब there is a shortfall in the collateral security, or you kindly मतलब secure us more. And number 2, if it is possible, otherwise it will be a restructuring. If it is possible, they should give him a LAP loan against property, and maintain the 40 lakh limit. And just to save that account and just to help that account, and bank का purpose भी solve होगा. They should convince for the more collateral security. If that person is having and pledged the collateral security of sufficient value, the bank should convert that working capital loan into this LAP loan. राइट सर, राइट सर। अगला क्वेश्चन है, एक सीसी अकाउंट में कॉन्टिन्यूसली सीसी अकाउंट ओवरड्यू रहती है फॉर 80-85 डेज कॉन्टिन्यूसली, और पर्सन लास्ट 5 डेज के अंदर उसको कुछ पैसे जमा करवा के अंडर लिमिट ले आता है, और हर क्वार्टर में ऐसा ही होता है, तो व्हाट एक्शन शुड वी टेक? सर ऐसा है कि
ऐसा जो अकाउंट है ये तो you have just told one deficiency, but when you look into the details of this account, if you go for a visit of this account, you will find 10 other deficiencies which will, considering only this point, it may or may not be classified as NPA, but considering if you go into the details of the account, you will certainly find that such accounts are NPA and they should be classified as NPA. The funds for which they have taken, उनका जो utilization of funds है, that is not for the objective of the funds for which the funds were taken. Okay. Right, sir. Another, भरत सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर ऐसा है कि sometimes there is a proper rotation in the turnover in the account. Parties, although parties under stress and turnover is sufficient, and he is trying to save that account from NPA 88th or 89th day को कर रही है, and turnover is sufficient. In that case, bank should see that if he is having sufficient stock, they should make a visit to a unit and should call the party. And if they have sufficient stocks, and banker should, for counseling him, banker should increase somewhat limit so that the account should be regular in future. If banker is feeling that stock is sufficient, sale is sufficient, or rotation is there in the GST returns, proper sales are there, but he is having shortage of working capital. ये भी एक point हो सकता है. Shortage of working capital की banker is not taking any action. Banker is adamant about the primary, about the collateral security, and they said that we are not going to increase the limit. उसके लिए they should think second alternative. They should see that whether it would be a prudent decision to increase the limit so that he should be able to run the account efficiently. Okay. Right, sir. The next question: if a NPA borrower has given guarantee to another borrower account of same branch, what should be the treatment of another borrower account? Jasminder sir ji. Anji sir. Sir, grantor and the borrower are two different entities, and since when the norms were changed many years back, so abhi they are different entities. So bank can press, if the account has gone bad of the grantor, bank can ask the credit worthy borrower that you provide additional guarantee or that, but on only on this basis that account cannot be classified as NPA. This is my view. Okay. Yes, sir. Over to Bhartaran sir. Yes, sir. I 100% agree with Jasminder ji. Bank cannot classify the grantor's account as NPA merely on the basis of that he gave the guarantee another account, and that account is not related to him. It is the other way around. Yes. Borrower's account, grantor's account has gone NPA, and the other borrower जिसकी उसने guarantee दी थी उसके लिए. उसका NPA होगा उससे. हाँ जी. No, वो उसका अकाउंट NPA नहीं होगा जिसकी. नहीं होगा. This is what I say. Right. ठीक है sir. Right. Sir, whether next question, whether we can classify CC account as NPA on the basis of funds diversion. Otherwise account normal routine में चल रहा है सर, but funds divert हो रहे हैं. Exact example क्या है सर इसकी? बंदे की 5 करोड़ की CC लिमिट है और उसने कहीं फ्लैट बुक करा लिया और हर महीने 10 लाख रुपए महीना उसकी किस्त जा रही है, वो इसमें से निकल रही है. There are 2 points. Yes. One, when the bank gives the fund, it takes undertaking from the borrower that during the currency of bank loans, unsecured loans or capital funds will not be withdrawn. If that is the case, that treatment is different. Otherwise, if you take it from the
other way, maybe at the end of the year, even after repaying that 10 lakhs, if the NWC is sufficient, so there is no reason that account may be classified as NPA, or that account, those funds may be considered as diversion for that. If it depends on these 2 points. Sir. Okay. Over to Bhartaran, sir. Yes, sir, I agree with him. Diversion is a very serious thing. If in spite of that, he will be able to save the account from NPA, then to some extent we agree with you, with the borrower. जब भी वो उसने डाइवर्ट तो किए हैं, वहां से फंड सीसी लिमिट से मतलब निकाल के प्रॉपर्टी में लगा दिए उसने, तो ये तो मतलब क्लियर कट डाइवर्जन. फॉर व्हाट पर्पस बैंक हैज सैंक्शन फॉर द सीसी, बैंक हैज सैंक्शन फॉर द वर्किंग कैपिटल, बैंक हैज सैंक्शन फॉर द stock, and he used in the property. Bank may also classify that account as fraud. Bank may also classify that account as fraud, and he will issue the notice to the borrower, and if he will not return back those funds, bank may classify as fraud. Sir, फिर हाँ जी जसमिंदर सिंह जी. Sir, वही गल है कि we have to go deep into the case as per bank's commitment at the time of sanction. अगर उन्होंने ये अंडरटेकिंग ले ली कि भी जो NWC है वो विड्रॉ नहीं होगी, जो अनसिक्योर्ड लोन्स है वो विड्रॉ नहीं होंगे, और जो कैपिटल फंड्स है वो विड्रॉ नहीं होंगे, तो इट विल नॉट बी क्लासिफाइड. आप एक 10 लाख की एग्जांपल दे रहे हो, मैं आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. बोरोवर ने सीसी लिमिट ली थी, देन ही बोरोज ए कार. उस कार की ईएमआई बन गई मान लो 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया महीने की. ही इज पेइंग दैट फ्रॉम द सीसी लिमिट. नाउ इफ हिज एनडब्ल्यूसी इज रिड्यूसिंग, so bank needs to be serious, and other circumstances maybe we have to look into it. But if the NWC is intact and the banker has allowed those to be drawn, they are passing it every month, then there is no reason why we should classify that account as NPA. Okay, right, sir. Sir, next question. If a sanction condition not complied, then can account be classified as NPA? But again, we have to go into the details of the sanction, which condition has not been satisfied. Suo moto on a blanket, we cannot give any suggestion or advice. You have to look into the which particular condition of sanction has not been followed, which condition has not been fulfilled. We'll have to look into the details. Otherwise, we can simply write if the account is functioning, if the repayments are regular, if the account is rotating, if the stocks are regular, debtors are okay, creditors are okay. Simply on these matters, we may report that these sanction terms and conditions have not been followed, but we cannot classify that account as NPA without going into the details, simply on these conditions. Okay. हाँ जी, over to sir Bharat Ratan जी, आप if you want to add something. Sir, वर्जन वाले पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं कि कोई अगला पॉइंट आ गया? अगला पॉइंट आ गया सर. अच्छा, चलो फिर मैंने वो ध्यान नहीं दिया उतना. सर इसमें पॉइंट ये था कि if sanction condition not complied with, then can account be classified as NPA or not? नहीं, उसमें तो ये पीनल प्रोविजन लगेगी और LFAR में रिपोर्ट करें. राइट सर. पेनल्टी बैंक की एवरी मतलब उसमें लिखा होता है कि इफ यू विल नॉट fulfill the sanction condition, this much of interest penalty will be imposed. Okay.
है पेनल्टी, और वो LFAR में करेंगे। जब भी किसी ने वो कोलेटरल सिक्योरिटी में बोला था कि आई विल गिव कोलेटरल सिक्योरिटी एडिशनल आफ्टर 6 मंथ, उसमें मतलब ये मतलब NPA करना इतना इजी नहीं है। पेनल्टी लगेगी, LFAR में रिपोर्ट करेंगे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट अब इंटरेस्ट भी आ रहा है, इनकम जनरेटिंग भी है। अब बैंक उसको NPA कर दे तो बैंक विल बी इन ए लॉस। राइट राइट सर, वही क्राइटेरिया हो गया जो जैसे आपने कहा कि हर बात मतलब आप NP की तरफ ना भागें, थोड़ा ये भी देखें कि बैंक रेवेन्यू जनरेटिंग है account अब या ये नहीं है। मोस्टली क्या CS का इस तरफ ध्यान है नंबर बनाने में कि मैंने इतने अकाउंट NPA कर दिए। टेक्निकल ग्राउंड पे करना तो आपके हाथ में है, सही बात, राइट सर, ठीक है। जो नहीं भी कर सकते। नोबडी इज गोइंग टू एलिगेट यू व्हाई यू हैव नॉट क्लासिफाइड दैट अकाउंट एंड राइट 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 उस अभी है। हाँ, हाँ जी उसमें जब भी आप क्लियर लिख देते हैं कोई ऐसा LFAR में बहुत स्ट्रांगली वर्डेड लिख देते हैं कि ऐसा करके ये है ये है ये है, तो देन RBI and some people will ask कि why you have not classified that account NPA and why you have not issued the MOC। ओके राइट सर। अब सर जो क्वेश्चन हमारे पास पहले आए थे थ्रू मेल्स और व्हाट्सएप वो तो कंप्लीट हो गए, चैट बॉक्स वाले कुछ क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी राहुल जी की तरफ से, फॉर NPA प्रोविजनिंग वेदर लोन अगेंस्ट व्हीकल शुड बी कंसिडर्ड एज सिक्योर्ड और नॉट। लोन अगेंस्ट व्हीकल, Yes. For NPA provisioning, whether loan against vehicles should be considered as secure or not. It is secured loan. It is secured loan. Always secured, sir. Okay. secured certainly, and bank will get the valuation of the this vehicle. If there is a shortfall, they may provide the shortfall। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ 90% ਜਾਂ 75% ਜਾਂ 80। नहीं सर, नहीं ही एक्चुअली उन्होंने बाद में एक और लाइन ऐड करी है इसमें कि अकाउंट होगा डाउटफुल, और डाउटफुल होने के बाद क्या हम उस अकाउंट को जो व्हीकल के अगेंस्ट है या स्टॉक के अगेंस्ट है उनको सिक्योरिटी कंसीडर करेंगे या ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨॉर्म्स ਲੱਗਣਗੇ SMA 0 1 2 ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨॉर्म्स ਤੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਵਾਲੇ मतलब 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੱਗਣੇ। ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੈਦਰ ਵਹੀਕਲ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਔਰ ਨਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਰੇਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅਵਨੀਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਡ ਜਾਂ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। अवनीत जी हिंदी या इंग्लिश में काइंडली कुछ मेंबर्स का आया था कि हिंदी या इंग्लिश में ही रिप्लाई और डिस्कशन करें। Because of the view that in whether its vehicle is getting regular insurance or not. Okay. During the period after account turned NPA, vehicle must get insurance on regular basis. Otherwise, security value get deteriorated. Right, right. राहुल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कुछ और इसमें पूछना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग एनी अदर पॉइंट टू गेट क्लैरिफाई, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ। ਰਾਹੁਲ ਮਹਾਜਨ ਯੂ ਆਰ देयर? मेरा ख्याल चले गए हैं, probably he was in the bank। he is connecting, he is in the process to connect। ओके ओके, चलिए आप इतने अगली क्वेश्चन ले लेते हैं। राशि सिंगला जी का क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है सर वाइल ऑडिटिंग RACC ब्रांच if difference in rate of interest is found as per sanction and CBS, then what is the course of action? Is it to be mentioned only LAFAR? नहीं, we have to debit the additional revenue income as a MOC। But sir RACC branch, ਸਰ RACC ਜਦ ਇੰਟਰਸਟ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, we have to provide the interest that will be accounted for as a MOC, the interest not being charged। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ P&L ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। but that branch is under statutory audit and conducted by audit by some other CA। ਸਰ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉੱਥੇ।
ओके ਇਹ SBI ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੈਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ओके ओके राइट राइट राइट। राशि जी आप अनम्यूट करके अगर कुछ और पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं इस बारे में, नहीं तो फर्दर प्रोसीड करें। राशि सिंगला जी इज देयर, तो अगर आपने पूछना तो म्यूट अनम्यूट कर लेना जी खुद को। सर एक और पॉइंट है, अभी अभी उस पे आया व्हाट्सएप पे कि अगर एक अकाउंट ऑपरेशन में है, बंदे ने आज से 5 साल पहले लोन सैंक्शन हुआ, 50 लाख का लोन ले लिया उसने, और 50 लाख लेते ही वो 6 महीने बाद आके 20 लाख 25 लाख एडवांस जमा करवा गया, रीपे कर गया, और तब से लेके 4 साल से आज तक बैंक अकाउंट में ब्याज लगी जा रहा है, कोई रिकवरी नहीं। बट उसका थ्योरेटिकल बैलेंस होना चाहिए था एज पर बैंक रिकॉर्ड, अगर EMI बेस चले 30 लाख, बट बैलेंस उसका 25 लाख है आज की डेट में। तो पर इंटरेस्ट 4 साल से रिकवरी नहीं हो रही, कोई एंट्री क्रेडिट में नहीं है, सारी एंट्री डेबिट में है, इंटरेस्ट की हर महीने इंटरेस्ट लग जाता है। तो क्या उस अकाउंट को कैसे कंसीडर करें? सर काइंडली थोड़ा सा और बता देंगे, रिपीट कर देंगे थोड़ा सा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर ये। सर एक लोन सैंक्शन हुआ आज से 5 साल पहले 50 लाख रुपए का, उसमें उस पर्सन ने 6 महीने बाद आके 25 लाख एडवांस जमा करवा दिया इन वन शॉट, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होकर 25 लाख रहेगी, और 25 लाख पे इंटरेस्ट लगता रहा हर महीने। आज तक उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, 4 साल हो गए, कोई रिकवरी नहीं हुई उसे 4 सालों में, 4-4.5 साल में। बट उसका वो अकाउंट अभी भी स्टैंडर्ड दिखा रहा है। रीजन क्या है? बैंक के रिकॉर्ड के हिसाब से एज पर बैंक रिकॉर्ड थ्योरेटिकल बैलेंस शुड बी 30 लाख, बट एक्चुअल बैलेंस 25 लाख है। तो वो जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो थ्योरेटिकल बैलेंस से कम है, तो इसलिए अकाउंट स्टैंडर्ड दिखा रहा है। बट पिछले 4 साल से बैंक सिर्फ ब्याज लगा रहा है, रिकवरी कोई नहीं। सर इसका टेन्योर कितना था लोन का? 15 ईयर्स जी। तो सर जैसे इंटरेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਕਰਾਤਾ, in this case when borrower has deposited 25 lakh rupees in the account, whether EMI amount is altered according to the changed principal or not? Sir, nothing was changed. Nothing was changed. Everything was If according to not the changed, sanction. that means loan is 50 lakhs. Still it is laying in the 50 lakhs bracket, and 25 lakh is the advance amount for the EMI. Yes. Not for There the EMI, will sir. not be a possibility. We can't say, sir, interest is not getting served for last 4 years. Interest itself gets served along with all the EMIs in a one shot. Sir, If it we take as it a principal, the principal has been repaid, in that case, EMI must have been altered. And that altered EMI, if not fetching the interest for last 4 years or so, for that matter, a period of time more than 3 months, then downgrade can be taken up. but sir जैसे Rest panelists are there, but I personally feel because if EMI is not altered, we can't say कि principal is repaid. बट सर आप की बात को वो करते हैं डिस्कशन इसमें। उन्होंने जब मेरा 50 लाख का लोन सैंक्शन था तो 50 लाख पे ब्याज लगना चाहिए था। एज सुन एज बोरोवर डिपॉजिट 25 लाख एज एन एडवांस, तो मेरा ब्याज लगना 50 लाख की जगह 25 लाख पे शुरू हो गया, क्योंकि मैंने 25 लाख पे कर दिया। नहीं सर, EMI अल्टर हो गई। सर EMI नहीं अल्टर हुई, पर प्रिंसिपल पे ब्याज तो मेरा उसी अमाउंट पे लग गया ना जो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। सर ऐसा नहीं होता सर। हाँ सर जब हम लोग एक फाइनेंस लेते हैं, 50 लाख रुपए का फाइनेंस लिया, तब उसका EMI जनरेट हो गया, EMI बना दिया हमने। किसी भी, जैसे आप कह रहे हो, इस केस में EMI अल्टर नहीं किया जाएगा, EMI विल रिमेन सेम। आपके सिस्टम में वो आपका अकाउंट जो है वो ओवरफ्लो दिखाएगा, ओवरड्यू नहीं दिखाएगा, ओवरफ्लो दिखाएगा। जब तक के आगे तक जितनी किस्तें उसने भर दी, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अवनीत जी, कि उसका प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो अपने आप पहले से एडवांस में आ गया है। जब वो जाके वहां पे मिल जाएगा कि हाँ जी 25 लाख जहां तक बनता था, जब वो वहां तक पहुंच जाएगा, उसके बाद ये सिस्टम आपको ओवरड्यू दिखाना शुरू करेगा। तब तक ये ओवरफ्लो दिखाता रहेगा। ओवरफ्लो दिखाने की वजह से ही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, हमारी क्वेरी यही है कि ओवरफ्लो दिखा रहा है और उस करके सिस्टम उसको एनपीए कर नहीं पा रहा। हमारी नॉलेज में आ गया तो हमें उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर होएगा ही नहीं। सर अब अवनीत जी इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, अब नहीं हुआ, 4 साल निकल गए, ठीक है, अगले साल फिर ब्याज डलता रहा, पैसा नहीं आया, उससे अगला फिर, अब 6 साल निकल गए। 6 साल के बाद जाके क्या हुआ, थ्योरेटिकल बैलेंस मेरा 20 लाख आ गया, एक्चुअल बैलेंस 25 लाख है, ओवरड्यू हो गया।
ओवरड्यू तो सर उसी टाइम हो जाएगा जब 2490 2495 आ जाए। हाँ जी, हाँ, आपका थोड़ा एग्जांपल को राउंड ऑफ में हाँ। लेके चल रहा हूँ मैं तभी। तो यस जब यस अकाउंट यस। ओवरड्यू हो गया, मैं तब उसको अगर एनपीए करूंगा अकाउंट को आफ्टर 6 इयर्स, तो मैं उसका इंटरेस्ट डी रिकॉग्नाइज पूरे 6 सालों का करूंगा जब से मुझे ब्याज नहीं नहीं आया। करोगे सर, नहीं 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 सर नहीं। वो सीसी अकाउंट ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਐਸ ਅਕਾउंट टर्म लोन ਚ नहीं होएगा। अनरियलाइज्ड तो रहा नहीं ना इंटरेस्ट, जब अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट होगा तो वी में रिवर्स, इसमें तो इट हैज बीन पेड इन एडवांस, दैट इज व्हाई मतलब वी आर नॉट गोइंग टू रिवर्स इट। ये बाकी ये सब्जेक्टिव व्यू है। पर सर अभी ना एसबीआई वालों ने तो इसे लॉक इस जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं इस पे एग्री कंसेंट दे दी कि अगर आपका इवन शायद मेरे को लगता है सॉफ्टवेयर में भी होने लग गया कि अगर आपका ब्याज एडवांस आ गया तो बाद में ब्याज भी नहीं आ रहा तो अकाउंट वो कंसीडर एनपीए कंसीडर कर लेते हैं। I understand sir, ਤੁਸੀਂ but we can discuss what is the borrower's default here। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖਾਤਾ ਹੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੇਸ ਲਾਂਗੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲ ਕੇਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਤਾਂ ਇਟ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਮੋਟ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮ ਕਾਂਸਲ ਜੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਸ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਸੇਮ ਮੂਮੈਂਟ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਹਾਡਾ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाता है। सर इशू तभी आता है ना जब मेरा इंटरेस्ट प्रिंसिपल कम प्रिंसिपल पे लग रहा है, इंटरेस्ट रिड्यूस हो गया और बोरो डबल बेनिफिट ले गया, प्रिंसिपल भी कम करा गया और इंटरेस्ट भी कम लग रहा है और 3 साल 4 साल से आ नहीं रहा ब्रांच में, रिकवरी नहीं हो रही, अकाउंट फिर भी स्टैंडर्ड है। ठीक है, पर इस केस जे प्री पेमेंट चार्जेस वाली क्लॉज ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਫ दैट क्लॉज इज फिनिश्ड, ठीक है, प्राइवेट बैंक्स हले भी किते ना किते ला रहे हैं या दूसरे ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਸ ਹੋ आफ्टर 6 months या आफ्टर 1 year प्री पेमेंट चार्जेस नहीं ਲਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ in that case it is ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਊ ਹੈ that interest or principal that will be considered as realized। this is हाँ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ after say 5 years 6 years ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ if we go like this that particular year ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, तो if ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਊਨ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਈਅਰ ਦਾ ਅਨਰਿਕਵਰਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ओके, so if that balance period shows unrecovered interest ਤਾਂ obviously if they go back ਤਾਂ ਉਹ unrecovered ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਪੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ ਐਮਓਸੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। Otherwise, if it is like that, कि भी principal recovered and ना advance interest recovered and ना तो accordingly फिर वो फर्क पै जाए। ओके सर, राइट। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ if SBI has not changed the CVS system procedure, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ DP ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ। राइट सर, राइट। ਉਹ ਮਤਲਬ otherwise whatever view their management can take, they can take, and they have the internal guidelines to classify that account NPA, they may classify। if they classify कि भी उन्होंने उधर de-recognize कर ले interest, तो I don't think कि we further need to have any discussion on this कि भी तुसी इन्हों de-recognize क्यों किया। But if they have not de-recognized, still I think कि भी it is as good as recognized कि भी वो पुराना interest recognize, क्योंकि ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ as per as auditor's point of view conflict of interest ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। RBI ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ certain limit ਦੱਸੀ ਹੈ, if account go beyond that limit, should classify that account NPA। अब उसके नीचे में if you have any policy, any direction, you can classify, you can make more provision। RBI has said to that in the case of substandard account you have to provide 15%, bank may provide 20%।
ਰਾਈਟ ਸਰ, ਰਾਈਟ ਸੀਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। CC account, let us say if it is 1 crores and 90 crores is 90 lakhs is utilized, and there is a interest levied for 3 years or 3 months or 90 days, which remains unrecovered, unrealized, you have to classify that account as NPA, and that amount has to be reversed as unrecognized, unrecovered as part of MOC. In cash credit account, this is the situation. Yes, certainly. Right, sir. Thank you, sir. I think all the questions have been answered, well answered by all the speakers, all the panelists. ਰਾਹੁਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਲਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ PNB ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਚ होंगे। बट राहुल जी अभी है नहीं, इसके बीच में तो नहीं है राहुल जी कहीं। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਐਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਐਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ PNB ਦਾ ਆਡੀਟਰ ਹੈਗਾ? PNB ਦਾ anyone from Punjab National Bank auditing PNB branches? Sir, regarding any query, for something special? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। That is regarding to consideration of 90 days on which date? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ if the account is considered as NPA on 16th 11, to give you an example, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ that account will be considered as NPA. While I have a different view ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਡਿਊ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਵੀ ਹੁੰਦਾ, from that day you have to consider 90 days. ਸਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਲੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲੈਵੀ ਇਨ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ, and if matlab they want to upgrade the account, in case of upgradation they take interest up to the 15th 16th of the month, whatever may be the date. But in the case of NPA, if interest is not levied, interest is levied on the end of the month, then they will see the position. ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 90 ਦਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਮੰਥ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, 90 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 90 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। 90 ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਡਿਊ ਆ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਡਿਊ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ 16/11 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਡਿਊ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਤਾ NPA ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਡੇ, 90 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਦੈਟ ਆਈ ਐਗਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਵੀਡ, ਭਾਵੇਂ ਡੇਲੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈਵੀਡ ਔਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 90 ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥੋੜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਿਊ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। तो मैंने म्यूट ऑल कर दिया, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए काइंडली। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਾਈ ਵਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। But I am of the firm view 90 days means after the interest is levied in the account, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ। Okay, right. So all the queries have been answered. If you want, otherwise want to share anything from bank audit point of view, all the speakers are requested to please share. Otherwise, any member have any query, he may unmute himself and ask the query from the panelist.
फिर एक पॉइंट मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट मिस्ड, किते शायद कुछ मेरे को क्वेरीज आईयां सी, द कैश रिटेंशन लिमिट इज से 10 lakhs, and every second day the limit is beyond the holding of the cash in that branch is say more than that, and if we calculate average balance at the month end, that is like कि भी ओदा 18 lakhs आ गया. So one thing is कि as per LFAR guidelines we have to provide that list as per, if it is say 20 days 15 days ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ. If it is like 365 ਦਿਨਾਂ ਚੋਂ 200 ਦਿਨ ਲਿਆ ਤਾਂ we have to provide by annexure ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ 200 ਦਿਨ ਲਿਆ. And the another point is ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ that means if there is a theft or robbery, the insurance company will only provide up to 10 lakhs, not beyond that. So we need to report also that there is, besides the additional holding of cash, besides that irregularity, the further irregularity ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ add on ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is insurance. Right sir. Sir insurance से हाँ, risk ਜਿਹੜਾ ਉਹ बैंक ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ. Definitely right. सर इंश्योरेंस से मुझे एक और पॉइंट याद आया. अब एक अकाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब लिमिट सैंक्शनड है वो 40 लाख के लिए फॉर एग्जांपल, उसमें स्टॉक की सीसी लिमिट है, उसमें स्टॉक की इंश्योरेंस करवा रखी है बैंक ने खुद ही 50 लाख की, बट क्लाइंट के पास स्टॉक इन अबंडेंस होता है 1 करोड़ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ होता है हमेशा. लिमिट 40 लाख की है, इंश्योरेंस 50 लाख की है, बट एक्चुअल स्टॉक 1.25 करोड़ होता है, एंड दैट स्टॉक इज प्रोन टू फायर. अगर उस बाई चांस मिस हैपनिंग होती है, 1.5 करोड़ का स्टॉक बर्न हो गया और इंश्योरेंस मेरी 50 लाख है, सीसी लिमिट 40 लाख है, तो मुझे कितना, कंपनी जिसका बर्न हुआ उसको कितना क्लेम मिलेगा, या बैंक को क्या 100% 40 लाख मिल जाएगा? नहीं सर नहीं, इंश्योरेंस वालिਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫੰਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇ 1 ਕਰੋੜ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋ ਰੋਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਦਾ ਕਲੇਮ ਬਣਦਾ. ਸੋ ਆਈਡੀਅਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ that should be as per the average stock, number 1. ਨੰਬਰ 2, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਰੋਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆ 40 ਲੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਕਰਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਬਟ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ we have to go into the details of the case. Ideally, technically, it should be full stock should be insured, especially if it is prone to fire risk. Okay. सर एक मैं होर पॉइंट एडिशन करना चाह रहा जी सर. हैगा कि इंश्योरेंस कंपनी हैगी ना वो प्रोरेटा दिंदी है इंश्योरेंस. ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੈ 50 ਲੱਖ ਦੀ, 12.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦੇਣਗੇ. हाँ बिल्कुल ठीक है. अच्छा, फिर तो सर इसका मतलब वो अगर आप इंश्योरेंस बंदा कहता है कि 40 लाख के स्टॉक की मेरी फुल इंश्योरेंस है, तो फुल इंश्योरेंस तो हुई नहीं ना इसका मतलब? ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਇਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ. ਇਹਦੇ ਜੇ ਜਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਪਾਓ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਰੇਟਾ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल. ਉਹ ਜੋ ਸਟਾਕ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੌਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੇਜ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਰੇਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕਲੇਮਸ ਦਾ ਫਾਇਰ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਗੇਮ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ मतलब मेजर फायर होवे ना वो कंसल्टेंट लाख 2 लाख रुपया 4 5 लाख रुपया फीस लेते हैं. तो फिर सर अगर फायर हो जाए किसी इंडस्ट्री में, तो जो बैंक के पास स्टॉक स्टेटमेंट्स आई हैं मंथली, उनके बेस पे वो कैलकुलेशन करते हैं, मंथली एवरेज निकालते हैं. दोबारा दसो.
वो भी स्टॉक स्टेटमेंट बैंक से भी लेते हैं, लेते हैं। बुक्स में भी देखते हैं क्या स्टॉक निकल रहा है। नहीं बुक्स और में तो एक्चुअल चलो, जिस डेट को फायर हुई है बुक्स में तो उसी डेट का स्टॉक कंपनी के पास आएगा ना, कंपनी हाँ, वही हाँ डेट जी। प्रोवाइड करेगी। हाँ मान जी। लो किसी भी डेट को हुआ, कंपनी ने कहा नहीं हमारा 1.5 करोड़ का स्टॉक पड़ा था, हमने इतना क्लेम लॉन्च कर दिया। ਸਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੇਸ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਫ the borrower is able to prove ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ the insurance company has to pay as per the record of the borrower because borrower takes the plea ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ बट सर एस्टिमेटेड में क्या इतना फर्क पड़ जाएगा 300% का? ਨਹੀਂ ਸਰ whatever it is let us say ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 20-25 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਫ ਦਾ ਬੋਰੋਅਰ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਲਾਅ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੇ, मतलब वो पे करे ना करे बट केस लॉ इज सेटल्ड ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਰ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਚ ਵੀ ਹੈ ਕੇਸ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦਾ ਵਾ। ठीक है राइट सर। हाँ जी सर, मेरे को लग रहा है अभी सारे क्वेश्चन भी आंसर हो गए आपके और बाकी क्वेरी। ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਸੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी सर, हाँ जी। ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਜੇ ਉਹ ਖਾਤਾ ਐਨਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਬੈਲੈਂਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਜੀਟੀਐਮਐਸਸੀ that will be considered as the security value। ਜੇ ਫਰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ। ओके ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਕਲੇਮ, ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਇਫ ਕਲੇਮ ਇਜ਼ ਫਾਈਲਡ 6 months back, 8 months back, then it is a subjective view। auditor can say sir ये 8 months back आपने CGTMA में claim file किया, it is likely that this claim is rejected and you cannot reduce that CGTMA claim into the loan amount, and I want that it should be provided 100% without deducting the CGTMA claim। And normally you will see claims banker are reducing the CGTMA claim pending 2 year back, 3 year back, just to make the default to the auditor। ओके so the correspondence with CGTMSC that also has to be taken on record। Yes, long back they have rejected, but bank not showing, and they राइट सर। reducing from the NPA account, and on the net they are providing। Anji, that seems to be all over from my side। So in any case, ਜੇ ਤੁਸੀਂ probably ਜੇ anyone wants ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ point ਦੇ ਉੱਤੇ you can have my number, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਅਵਨੀਤ ਜੀ ਦਾ। राइट सर। ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। सर क्वेरीज अब और बढ़ेंगी, गेट रेडी ऑल दी 3 पैनलिस्ट। क्या आपको क्वेरीज आएंगी कि बैंक ऑर्डर तो शुरू हुई है तो 15 तक चलेंगी तो क्वेरीज आएंगी सर डेफिनेटली। हाँ जी चलिए सर, मैं अब जैसे क्वेरी सारी आंसर हो गई है, कोई चैट बॉक्स में भी नहीं है और कोई अटेंडी भी, कोई मेंबर भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आई रिक्वेस्ट CA सोम कांसल जी टू प्लीज प्रपोज फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। कांसल साहब सर
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਹੋ गए। सर मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इतना यूजफुल ये वेबिनार रहा और बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने हमारे को दी। स्पेशल थैंक्स गोज टू गुप्ता जी। गुप्ता जी ने जो आज टेक्निकल पॉइंट बताया वो कभी कभार ही ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि जो एकदम से निकल के चीज बीच में से आती है। बाकी जैसे हितेश जी बता रहे हैं कि वेबिनार के बाद अब क्वेरीज और बढ़ने वाली हैं, तो बड़ा अच्छा लगेगा सबको आपसे बात करके। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट। थैंक यू सो मच हितेश जी के आपने मुझे भी मौका दिया इसमें पार्टिसिपेट करने का। थैंक यू सो मच। ओके जी, ठीक है हितेश जी, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ। हाँ जी सर थैंक यू सर, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू कांसा साहब ऑल्सो कि उन्होंने फर्स्ट इंस्टांस में मॉडरेटर का यस कर दिया, और बाकी मेंबर्स को भी थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक यू भरतरतन जी, जसमिंदर जी एंड अवनीत जी एंड सोम कांसल जी। थैंक यू वेरी मच। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਡਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਆਵਰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। whatever best you can do and whatever best reporting is there, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਪੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਵੀਨਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਵਨੀਤ ਜੀ, ਹਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਸੋਮ ਕੰਸਲ ਜੀ and all members for providing us this opportunity. And I definitely can say कि भी ਇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਵਲ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। सर MK गुप्ता जी ने चैट बॉक्स में डाला वंडरफुल वेबिनार एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू MK गुप्ता जी, थैंक यू। MK ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਟੂਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਅਪਡੇਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਓਕੇ ਜੀ, all the best, all panel member. Thank you sir, thank you and council. Thank you sir, thank you. Should I leave? Thank you thank you sir, thank you, bye. Okay, bye.